Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, Sources of Food. Learning objectives, nutrients in foods, types of food, functions of food, sources of food, food variety, food habits of living organisms, and food ingredients. Nutrients in food. The ancients in vehicles burn fuel to provide energy to function. Without fuel, the vehicles would stop running. Similarly, our body also needs energy to function. We get energy from food that is required by the body to carry out all the activities. The food that we eat contains several substances that provide nourishment essential for the maintenance of life and growth. These substances are called nutrients. The process by which body takes in food and uses it for growth and development is called nutrition. Any substance that provides nutrition and energy to the body is food. Nobody can live without food. We all need food to live and stay healthy. देखिए कोई भी इंजन जो है बिना फ्यूल के चलता है नहीं किसी भी व्हीकल में. इसी तरह से हमारी जो बॉडी है उसे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फंक्शन करने के लिए एंड ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से. तो फूड में आपके बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. एंड वो प्रोसेस जिसमें बॉडी जो है फूड को टेक इन करती है देन उसको यूज करती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. Functions of food. Provides energy to carry out daily chores, helps in our physical and mental growth, protects our body from diseases and infections. All of us normally take 3 meals a day, breakfast, lunch and dinner. But do we eat the same food? देखिए फंक्शन क्या है फूड का. सबसे पहले आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. डेली आप जो बहुत सारे काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो फूड से कंप्लीट होती है. इसके अलावा आपको फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं एंड साथ ही साथ आपको किसी भी डिसीज या फिर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं. अब हम नॉर्मली जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये 3 मील लेते हैं, पर क्या हम हमेशा सेम फूड खाते हैं? फूड वैरायटी. Different people have different choices of food. There is a variety in the food eaten by people of the same place. Foods taken at breakfast, lunch and dinner are different. People belonging to different parts of the country eat different kinds of food. People in different parts of the world eat different kinds of food items. This is because of the differences in the climate, soil and culture in different regions of the world. अब देखिए ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर हम तीनों मील जो है हम सेम नहीं खाते हैं. अब देखिए कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स में आपके मील डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लोग खाते हैं. इसी तरह से आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं वहाँ पे आपको अलग तरह का खाना दिखेगा. तो ये डिफरेंट एक्चुअल में क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट या सॉइल में क्लाइमेट या कल्चर. ओके, दैट इज वाई वी सी अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फूड. हियर इज एन एक्टिविटी 1. आपको एक्टिविटी दी गई है, आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है कि वो उन्होंने कल कौन सा खाना खाया था ब्रेकफास्ट में, लंच में एंड डिनर में. सो ये आपको इस तरह से दिए गए जैसे नेम ऑफ फ्रेंड्स, ओके, एंड ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. फिर आप बाकी अपने फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे, उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया एंड डिनर में क्या खाया, वो आप इस टेबल पे लिखेंगे. फूड इंग्रेडिएंट्स. All these food items are made up of different raw materials. The raw materials which are used for making a dish are called its ingredients. In other words, ingredients are substances that we combine to make food item. Some ingredients commonly used in food preparations are rice, wheat, flour, lentils, spices, vegetables, fruits, milk, eggs, curd and cottage cheese. Chapati is made of wheat flour mixed with water. A curry is made from vegetable mixed with spices, salt, oil and water. Thus, different food ingredients are used to make a variety of dishes. अब ingredients क्या होते हैं? देखिए एक फूड आइटम में जो जो चीज़ें आप डालते हैं उसे ingredient कहते हैं. जैसे कि आपका चपाती है तो चपाती किससे बना है? आटा एंड वाटर से, राइट? तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं. करी जो है वो किससे बनी है? वेजिटेबल्स से, जिसमें आपके स्पाइसेस हैं, सॉल्ट है, ऑयल है एंड वाटर है. तो डिफरेंट फूड आइटम्स को या डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है वैरायटी ऑफ डिशेस बनाने के लिए. अब देखिए आपको एक टेबल गिवन है, आपको फूड आइटम्स गिवन है लाइक मक्के की रोटी एंड सरसों का साग. ये कहाँ पॉपुलर है? आपका पंजाब स्टेट में. एंड इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देखिए कॉर्नफ्लावर, मस्टर्ड एंड बटर से बना. इसी तरह से आपको ये सारे आइटम्स दे रखे हैं, फूड आइटम्स कौन से स्टेट में खाए जाते हैं एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स. Types of food. All the food items that we eat are mainly divided into 2 categories, raw food and cooked food.
Raw food items are those which we eat as we receive them from the nature. We may just wash, clean or cut these items before we eat. We do not generally cook these items. All fleshy fruits, dry fruits and some vegetables fall under this category. Examples of raw food items are mango, grapes, apple, banana, radish, tomato, carrot, almonds, cashew nuts, milk, etc. Raw foods यानी जिसे आप कच्चा खाते हैं, जिसे आपको नेचर ने दिया है, आप उसे एज इट इज़ खाते हैं, बस आप उसे वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं या फिर कट करते हैं. लाइक ऑल दीज फूड आइटम्स जो है ये आप सारे क्या खाते हैं, ये आपके सारे ही आप रॉ फूड आइटम्स हैं. Cooked food items are those which we wash, clean and heat before we eat them. We may heat them over gas, induction cooker, etc. or in microwave, oven, chulha, etc. Cooking of food varies from one region to another. For instance, South India is famous for sambar, which is made up of dal, vegetables and spices. But in North India, a dal is cooked with some onion and tomato along with spices. But both these dishes look and taste differently. कुक्ड फूड आइटम्स आपके होते हैं जिन्हें आप पका के खाते हैं, उन्हें वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे एंड उनको हीट करेंगे. और हीट करने के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप उन्हें गैस में कर सकते हैं या इंडक्शन कुकर में कर सकते हैं. अब जो फूड की कुकिंग है वो भी एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करती है. जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे सांबर बहुत फेमस है जो दाल से बनता है, उसमें वेजिटेबल्स भी होते हैं और स्पाइसेस भी होते हैं. बट नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, दाल बनाई जाती है, उसमें डाला जाता है जैसे कि अनियन एंड टमेटो, उसके साथ कुछ स्पाइसेस होते हैं. तो जो दोनों ही डिशेस होती हैं ये डिफरेंट तो दिखती ही हैं, इनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है. एक्टिविटी 2 देखते हैं. देखिए इसमें आपको क्या करना है, रॉ फूड आइटम आपको लिखना है, देन कुक्ड फूड में आप फूड आइटम लिखेंगे एंड उसके क्या मेन इंग्रेडिएंट्स है. हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम? लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड वेयर वी गेट देम फ्रॉम. हमें फूड कहाँ से मिलता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं. Sources of food. The various food items that we eat can be divided into different categories on the basis of the sources from which they are obtained. The main sources of food are as under. Food from plants. Plants are one of the sources of our food. We eat different parts of plants. Some plants have more than one edible part. For example, banana. We eat the stem, flower and fruit of a banana plant. Let's read about some of the edible parts of plants. Roots. Some vegetables that we eat are actually the roots of plants. We eat roots of plants such as onion, carrot, radish, beetroot, turnip, etc. All these roots store food that we eat. अब देखिए plants, आपका main source of food जो है वो आपका plants आपके खाना आपको मिलता है. अब प्लांट्स के हम डिफरेंट पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं. जैसे अगर हम बनाना की बात करें तो उसके बहुत सारे पार्ट्स को हम अब कंज्यूम करते हैं, लाइक उसका क्या है, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट, राइट. इसी तरह से रूट्स, कुछ वेजिटेबल ऐसी होती हैं एक्चुअल में वो रूट होती हैं प्लांट्स की जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं. See, all these are examples of root. Stems. Some plants store food in their stems. We eat the stems of such plants as food. Some plants such as sugarcane and banana store extra food in their stems which are edible. Stems of certain other plants get modified to store food, for example potato and ginger. आप देखिए कुछ प्लांट्स के हम स्टेम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका पोटैटो एंड जिंजर है. इसी तरह से शुगर केन एंड बनेना ये अपना जो एक्स्ट्रा फूड जो है अपने स्टेम में स्टोर कर लेते हैं एंड फिर उसे वो एडिबल होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं. Leaves. The leaves of many plants are used as food. Cabbage, lettuce, spinach and fenugreek are some plants that have edible leaves. Fruits. There are many fruits that we eat. Some common examples are watermelons, mangoes and grapes. Tomatoes, cucumbers, brinjals and squashes are also fruits of their plant. फ्रूट्स आप खाते हैं. अब ये जैसे कि आप देखेंगे टोमेटो, क्यूकम्बर, ब्रिंजल्स एक्चुअल में ये फ्रूट है अपने प्लांट्स के. फ्लावर्स. A lot of vegetables that we eat are actually the flowers of a plant. Cauliflower, broccoli, bohemia or kachnar, artichokes and the flower of bananas are a few examples. अब बहुत सारे ऐसे vegetables हैं जो actual में flowers हैं. For example, all these are the flowers. Seeds. Seeds from a major component of our daily diet. Wheat, maize, millet and rice are eaten as cereals with some other seeds such as green gram, lentils, chickpeas and kidney beans are eaten as pulses. Seeds such as cumin, coriander, pepper and cardamom are eaten as spices. Mustard, groundnut and sunflower seeds are used for making oil and thus are called oil seeds. अब देखिए जो seeds हैं हमारी एक डेली डाइट का एक मेजर कॉम्पोनेंट है. जैसे आपके वीट, मेज ये सारे आपके क्या हैं, आपकी सीड्स हैं जिन्हें हम रोज़ खाते हैं. और उनके साथ इनको हम कंबाइन करते हैं कुछ और सीड्स के साथ, जैसे कि आपकी
लेंटल्स हैं, यानी आपकी दालें हैं, चिकपीज हैं, किडनी बीज हैं, राइट। ये सारे एग्जांपल्स आपके पल्सेस के। इसके अलावा जैसे क्यूमिन, कोरिएंडर, पेपर, कार्डमम, ये भी आपके स्पाइसेस हैं, राइट। और सीड्स हैं जो, राइट, एंड आपके जो मस्टर्ड, ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर के सीड्स हैं जिससे कि ऑयल बनता है, राइट, और इन्हें ऑयल सीड्स भी कहते हैं। Do you know milk contain 9 nutrients our body needs to grow and stay healthy, such as niacin, protein, calcium, riboflavin, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, phosphorus and potassium। देखिए, मिल्क में आपके 9 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, होते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। Food from animals. We also get food from animals. Some common animal food products are milk, meat, eggs, chicken, seafood, honey, oil, etc. Meat and eggs. Animals such as sheep, goats, hens, etc. commonly use a source of meats. Hens, ducks, turkeys, and emmets provide us meat as well as eggs. These are raised in large numbers in places called poultry farms. अब देखिए, बहुत सारे एनिमल से आपको फूड मिलता है, राइट। एनिमल से आपको एग्स मिलता है, एनिमल से आपको हनी मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है। तो जो एनिमल्स जो है बहुत सारे आपको लार्ज स्केल में पाले जाते हैं आपके मीट्स एंड एग्स के लिए, उन जहाँ जिस जगह पे उन्हें पाला जाता है उन्हें कहते हैं पोल्ट्री फार्म्स। मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल्स सच एज cows, buffaloes, goats and camels give us milk. Milk is considered a very good source of protein and calcium and helps the body grow stronger and healthier. The products that we obtain from milk are paneer, cheese, ghee, butter, cream and curd and are called dairy products. Dairy products यानी कि जो आपको जो चीज़ें आपकी मिल्क से बनती हैं, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं लाइक दीज एनिमल्स जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। Seafood. People living in the coastal regions usually eat fish as their staple food. Crabs, shrimps, and prawns are some other marine animals that are eaten here. Honey. Honey is a sweet tasting liquid made from the nectar of flowers by honeybees. They collect nectar from flowers and accumulate it in their hives. The nectar is then converted into honey and stored as food. We add honey to different food items to get the sweet taste. देखिए, जो लोग आपके कोस्टल रीजन्स पे रहते हैं वो सी फूड खाना पसंद करते हैं। वहाँ का स्टेपल फूड है एक्चुअली जो कोस्टल रीजन्स पे रहते हैं, जैसे क्रैब है, श्रिम्प्स है या प्रॉन्स हैं। इसी तरह से हनी भी आपको किससे मिलता है? हनी बी से। आपका एक स्वीटनर कह लीजिए, जो आप स्वीट टेस्ट जिससे आपको मिलता है, बहुत डिफरेंट आइटम्स में हम इसे यूज़ करते हैं। Do you know, can you think of an item that you consume daily but is obtained neither from plants nor from animals? Yes, it is salt. Salt is obtained from seawater. Seawater is collected in large pools. The water is dried up by sunlight and impure salt is left behind. This salt is cleaned in factories and made fit for human beings. आपको पता है, आप सॉल्ट जो आप डेली अपने डाइट में यूज़ करते हैं, ना ये प्लांट से आता है ना ही एनिमल से आता है। इनफैक्ट ये आपका सी वाटर से आता है। सी वाटर को बड़े बड़े पूल्स में कलेक्ट किया जाता है, फिर इवेपोरेट हो जाता है वाटर सन की वजह से, एंड देन वहाँ पे आपका बच जाता है इम्प्योर सॉल्ट। फिर इसको प्योरीफाई किया जाता है, क्लीन किया जाता है फैक्ट्रीज में। फूड हैबिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। We all know that plants prepare their own food with the help of sunlight, water and carbon dioxide. That is why they are called producers. However, animals cannot prepare their own food. They depend on plants and other animals for their food. That is why they are called consumers. On the basis of type of food eaten by animals, they are divided into the following categories. Herbivores. Some animals like elephants, cows, horses, goats, sheep, monkeys, parrots and rabbits eat grass and plant parts like leaves and fruits. They are called herbivores. Most grass-eating animals have sharp front teeth called incisors to bite off plants. They have a strong and broad back teeth called premolars and molars to chew their food. Rabbits and squirrels eat the hard part of the plant as they have a set of very long and flat front teeth. They bite the fruits, seeds and other plant materials which they break open with their sharp teeth. They have a pair of very sharp front both in the upper jaw and the lower jaw. This is called gnawing the food. अब देखिए, फूड हैबिट के बेसिस पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आपके हर्बीवोर्स हैं जो आपके प्लांट्स या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। तो ज़्यादातर जो आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, जिन्हें कहते हैं इंसाइजर्स, राइट। एंड इनके जो बैक टीथ होते हैं, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ये आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे कि अपना खाना ये च्यू कर पाते हैं। इसके बाद आपके जैसे रैबिट्स एंड स्क्विरल्स आपने देखे होंगे, ये प्लांट के हार्ड पार्ट को खाते हैं, राइट। तो इनके जो फ्रंट
टीथ होते हैं काफ़ी लंबे और फ्लैट होते हैं। ये फ्रूट्स को बाइट करते हैं, सीड्स खाते हैं या कोई प्लांट मटेरियल खाते हैं जिसको ये ब्रेक करते हैं अपने शार्प टीथ से, तो इसे कहते हैं नॉइंग द फूड, क्योंकि ये अपने खाने को नॉ करते हैं इसलिए इसे कहा जाता है नॉइंग द फूड। कार्निवोर्स, some animals like frogs, ducks, lions, tigers and foxes eat the flesh of other animals. They are called carnivores. Carnivores have a special sharp, long and pointed front teeth called canines to tear the flesh. They also have a strong flat grinding premolars and molars teeth to chew the meat and bones. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। तो इनके जो कनाइल्स होते हैं यानी फ्रंट टीथ, इनके काफ़ी शार्प होते हैं, जैसे कि ये पॉइंटेड होते हैं, जैसे कि फ्लैश को टीयर कर सकें। Omnivores. Animals that eat both plants and the flesh of other animals are called omnivores. Animals like the bear, crow and cat are omnivores. Human beings eat the roots, leaves, stem, fruits and seeds of plants, and they also eat meat, egg and milk of some other animals. Some of us humans by choice eat only plant food. Omnivores have both sharp front teeth like carnivores and flat teeth like herbivores. Sharp front teeth are used to bite and tear pieces of meat and flat teeth are used to chew the food well. अब ओमनीवोर्स आपके वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं एंड दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, जैसे कि आपका क्रो है, बेयर है एंड इवन हम ह्यूमन बींग्स भी आपके ओमनीवोर्स होते हैं। अब देखिए इन ओमनीवोर्स के पास क्या होता है कि इनके फ्रंट टीथ कार्निवोर्स की तरह होते हैं एंड जो फ्लैट टीथ होते हैं वो हर्बीवोर्स की तरह होते हैं। Scavengers. Animals that eat the flesh of dead animals are called scavenger. For example, vulture, wolf, hyena, etc. जो animals dead animals का flesh खाते हैं उन्हें कहते हैं scavengers. Parasites. Some microorganisms and insects live on or inside another organism called host. These organisms derive food from the host but cause a disease or infection to the host. Such organisms are called parasite. For example, वायरस, लाइस, मस्कीटो, टेपवर्म एटसेट्रा। कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर इंसेक्ट होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं यानी होस्ट में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपना होस्ट से अपना खाना डिराइव करते हैं, बट इनकी वजह से होस्ट को बीमारियां लग जाती हैं या फिर इन्फेक्शन, जैसे कि आपके वायरस, लाइस एंड मस्कीटो, टेपवर्म, ये सारे ही आपके पैरासाइट्स हैं। फूड चेन. All living things need energy to live and grow. Each organism depends on the other organism for their food. Every food chain starts from a plant. Plants are eaten by herbivores, which are further eaten by carnivores or omnivores. Such a series of organisms in which each is dependent on the next for the source of food is called a food chain. Producers, such as plants, are at the top of the food chain. Consumers eat producers and get their energy from them. Let us consider the food chain given alongside where producer grass is at the beginning of the chain. First, the grasshopper eats the grass and leaves. Rat then eats the grasshopper and it is in turn eaten by the eagle. If all the grasshoppers from this food chain disappear, lives of rats, eagles and many other animals will get affected. This shows that if one part of the food chain is affected, the complete chain gets disturbed. देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हर जो फूड चेन है वो स्टार्ट होती है आपकी, हमेशा रिमेंबर दैट, हमेशा स्टार्ट होगी प्लांट्स, फिर प्लांट्स को खाएगा हर्बीवोर्स, हर्बीवोर को खाएगा कार्निवोर या कोई ओमनीवोर। तो एक सीरीज चलती है जिसे कहते हैं फूड चेन, राइट। तो प्रोड्यूसर यानी कि जो आपके प्लांट्स होते हैं ये फूड चेन के टॉप पे होते हैं, राइट। जैसे कि देखिए आपका ट्री, इसे कंज्यूम किया डियर ने, डियर को कंज्यूम किया लायन ने, ओके। और अगर हम बात करें, आपको जो एग्जांपल दिया गया है इसमें, जैसे कि ग्रास, पहले फर्स्ट ग्रास होपर क्या करता है, ग्रास को खाता है, लीव्स को खाता है, देन रैट क्या करेगा, ग्रास होपर को खाएगा, एंड रैट को देन कौन खाएगा, ईगल खाएगा। अब जितने भी जो ग्रास होपर है फूड चेन में से अगर वो डिसअपियर हो गए तो आपके जो रैट्स हैं, ईगल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी। तो ये शो करता है कि आपकी अगर फूड चेन में कोई एक ऑर्गेनिज्म या एक पार्ट जो है फूड का वो इफेक्ट होता है तो कंप्लीट चेन गेट्स डिस्टर्ब्ड। Learning outcomes. Food is essential to live. Food gives us energy, keeps us healthy and helps us grow. All of us normally take 3 meals a day. दोबारा बोलते हैं ना 3 की जगह। Learning outcomes. Food is essential to live. Food gives us energy, keeps us healthy and helps us grow. All of us normally take 3 meals a day: breakfast, lunch and dinner.
There is a wide variety of food that we eat daily. All the food items that we eat are mainly divided into two categories, raw food and cooked food. Plants and animals are the main sources of food. Plants give us fruits, vegetables, dry fruits, pulses, cereals, etc. Different parts of a plant such as roots, stems, leaves, fruits, seeds, flowers store food. We get eggs, meat, fish, honey and oil from animals. Animals can be classified according to their food habits such as herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, parasites, etc. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.